linear law. आप लोगों में से जिन लोगों ने, those of you who've done ad maths, Kareem, please lower your hand. Those of you who've done ad math must have seen this topic before, but I want to emphasize on some of the things that are there, and I want you to understand what I'm really doing and see how it's being done. So yeah, it's going to be a little complicated as I start off with, but it's going to make sense as I go on. Okay. Acha. What is linear law? It says many scientific, economic, and social science quantities can be described as at least approximately by relationships which follow either an exponential growth or a decay law or else a power law. If we take logarithms of an equation which follows either of these two laws, we transform it into a linear expression. So what is my objective here in linear law? What I'm trying to do is I'm trying to transform curves into straight lines. So yeah, that's what I'm trying to do. I'm trying to transform curves into straight lines. Okay. And when I'm trying to do that, उसमें जाहिर सी बात है, if I use a normal axis, मैंने अगर y और x plot कर दिया, I have this plotting. सही है? So हो सकता है the data points that I get, अब मैंने actual data points लेना. What for example I did was I went to different schools और मैंने जो है वो I collected data on students' ages and their math marks. तो मुझे नजर आया कि एक dip आता है and then the sort of rise and so on. So I can see a relationship going on कि भाई ये जो है वो turn कर रहा है, but I don't know where it's going to turn from. सही है? So what I try to do is, in order to see a more solid relationship, I want this curve to turn into a straight line. Now with the same data points, I can't get it to turn into a straight line. So मुझे क्या करना पड़ता है? I sometimes have to change the axes. Okay, I have to put ln or lg or x square or something like that, some combination of the axis to turn it into a straight line. So what you'll be seeing in this topic predominantly is the axis changing, and when the axis changes, interpretations also change and the shape of the curve also changes. So yeah, so that is what my objective is, and that's what I am trying to do कि भाई मैं जो है वो एक curve को एक straight line में transform करूँगा. Okay. Now let's look at this first idea. Think कि exponential growth किया है. This is what I showed you in the last class as well. I showed you exponential growth equations. What they've done is they've taken log on both sides. मैं इसको LG कह देता हूँ. Log to the base 10. You have to take some base. It doesn't matter right now what base. I'm taking LG. Okay, if I take LG on both sides, what I get is LGY, LGA plus LGB power T. Okay, और मैं logarithms के rule लगाऊंगा. What I get is then T and LGB. Now, do people see that if I normally straight line की equation होती है y equals to mx plus c, but since I don't have a regular y and a regular x, मैं भी इसको लिख रहा हूँ capital Y equals to m capital X plus c. Do you understand that this equation that I've written, LGY equals to ये ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, सही है, LGA plus TLGB. Do you understand that this has transformed into a straight line equation? How has that transformed? Let's consider पहले हमारा y था, capital Y, उसकी जगह क्या आ गया है? LGY. So yes, so the y axis becomes LGY. Okay, instead of now plotting y values, I'm going to plot LGY values. मैं LGY की values plot कर रहा हूँ. Okay, इसी तरह इसी तरह ये देखते हैं ये क्या चीज होगी. This is probably going to be the constant. ये नजर आ रहा है कि a जो है वो एक constant है, तो ये इससे resemble कर रहा है. मैं कहता हूँ y intercept जो है y-intercept जो है, it's become what? It's become LGA. Okay. Then let's see what my variable was. यहाँ पे दो variables क्या थे?
One variable was, if I were to just point that out to you, एक वेरिएबल y था और एक वेरिएबल t था, सही है? So my x-axis is basically still the same, okay? And I get x-axis की जगह मैं लिख दूंगा t, and gradient की जगह मैं लिख दूंगा LGB. Now I understand that some of you might be lost at this point. इसलिए मैं अभी आपको एक detailed example पहले करके दिखाता हूँ. I'm going to skip over example 1, 2, 3. मैं बाद में इस पर आऊँगा. And let me just try to show you example number 4 first. सही है कि ये होता कैसे है, सही है? And let's try to do that first. Okay. I explained to you a concept. Let me try to demonstrate to you with an application question, and then I'm going to come back to these questions. Okay, let's look at this question. अब ये कहता है कि the trees in a certain forest are dying because of an unknown disease, unknown virus. The number of trees n surviving after 10 years after the onset of the virus is shown in the table below. अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता कि भाई आप जो है वो मुझे ये ग्राफ बना के दिखाएं इसका, what I would have done is मैं x axis पे n लिखता और यहाँ पे t लिखता. 1 पे मैं 2000 प्लॉट कर देता, 2 पे जो है वो मैं I would have gone on and plotted 1300, 3 पे I would have plotted 890, 4 पे I would have plotted 600. So yeah, you see the shape of the graph that is emerging? It's going to turn like that. Now, although I see कि इनका एक negative relationship है, but I don't precisely see कि भाई क्या rate of change आ रहा है. How is this changing? हर साल कितना decrease हो रहा है? It's not standard. What if I can make it standard? ये question आपसे क्या कहता है? कि the relationship n and t is thought to be the form this. You understand that this is right now a curve. This is right now a curve, okay? And what I can do is I can transform it into a straight line. Okay? How am I going to transform it? मैं ln लेता हूँ दोनों sides पे, ये बन गया ln y, ln a plus ln b power minus t. Okay? ये बना ln y, ln a minus t ln b. सही? अब क्या सबको ये बात समझ आती है कि what I have here, मेरे पास variables कौन से हैं? Let's highlight. ये variable है, y is a variable, t is a variable, this is a constant, b is a constant, and a is a constant. Okay, मैंने यहाँ तक मैं अगर ये कर लूँगा तो मुझे 1 मार्क तो मिल जाएगा. But let me just write it in more detail. मैं लिखता हूँ कि अब y axis क्या बन गई है? What is my new y axis if I were to write this like that? Y equals to mx plus c. What is my new y axis? ln y. What is my new x-axis? It's still the same, it is t. What is my constant? What is my y-intercept? It is ln a. And what is my gradient? It is ln b. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस एक्स को आपने जो ये n और t मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया, इसकी जगह अगर आप ln y और t प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. सही है? Instead of becoming a curve, it's going to become a straight line. सही है? और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी.
ये कहता है यूजिंग दिस गिवन डेटा ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। बोलो सर यहाँ पे आपने कैपिटल एन को वाई से रिप्लेस क्यों किया, उसी से कंटिन्यू नहीं किया? तो मैंने एन होना था ये, अच्छा सॉरी, आई शुड हैव रिटन एन, आई एम सो सॉरी, ये एन होना था। I'll write down n, मैं गलती से y लिख दिया। ओके मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि n की जगह अगर ln n प्लॉट किया जाए और t की जगह t प्लॉट किया जाए तो आई वुड एंड अप गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ दिस। तो ये आपने कंपेयरिंग जो करी है समझ नहीं आई, कंपैरिजन जो करा आपने। देखो अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस c होती है। अगर मैं इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं कह सकता हूँ वेरिएबल ग्रेडियंट इनटू वेरिएबल प्लस y इंटरसेप्ट। सही है, ये कह सकता हूँ मैं। तो तुम जो है इसको देखो, तुम्हारी क्या फॉर्म आई थी, ln a ln n और आई थी ln a माइनस टी ln b। अब तुम्हारा वेरिएबल क्या है, एक t है और एक ln n है। I have a variable t and I have a variable ln n. Okay. Now, if I compare this, तो तुम कहोगे कि तुम्हारी y axis जो है वो ln n बन गई है और तुम्हारी दूसरा वेरिएबल क्या है, तुम्हारा दूसरा वेरिएबल अभी भी t है, तो योर x axis is t। वेरिएबल के साथ साइन इग्नोर कर देंगे। आ रहा हूँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे एक छोटी सी। ओके अब वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ होता है, ग्रेडियंट मल्टीप्लाई हुआ होता है ना। सो यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल के साथ, यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है माइनस ln b, तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा माइनस ln b। और मेरा y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, व्हाट y इंटरसेप्ट विल आई एंड अप विद, माय y इंटरसेप्ट विल बी ln a, ये जो कांस्टेंट है। सही है, so you're always going to get this form, variable equals to gradient into variable plus constant, जिसको हम कैपिटल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ओके why don't you do this, I want you to do this small exercise first before I plot that graph for you। ये वाला देखें, उसने कहा in order for each of these equations this and this where a b की are constants is a straight line, they each need to be expressed in the form y equals to mx plus c, capital X and capital Y are each functions of x and y and m and c. Copy the following table and insert it in the expressions. I want you to try this first one and try this as well. आप लोग खुद से दोनों साइड पे ln लगा के try to convert it into the form variable equals to gradient into variable plus constant, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। Why don't you try and do this quickly? चाहिए मैं आपसे पूछता हूँ, I am giving you 5 minutes to do। यस सर मैंने कर तो लिया, लेकिन उसके अंदर मुझे बस ये लग रहा है कि ln y वेरिएबल है, एक मिनट, तो अच्छा x ग्रेडियंट हो गया। ओके एक मिनट, इसी तरह किया आपने भी। ओके यू हैव दिस। यस सर। आप मुझे बताओ व्हाट इज योर y एक्सिस, व्हाट हैव यू फिल्ड इन फॉर y एक्सिस। सर y एक्सिस पे x ln b। y एक्सिस पे x ln b कैसे आ सकता है? अच्छा हाँ ln y। ln y सही है। अब मुझे बताओ कि आपको अपनी x एक्सिस क्या नजर आ रही है, वेयर इज योर अदर वेरिएबल, व्हाट इज योर अदर वेरिएबल? x ln b, x ln b। योर वेरिएबल इज ओनली x ना, वेरिएबल तो x ही है ना सिर्फ, यहाँ पे x ही आ जाएगा। अब मुझे बताओ वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या अटैच्ड होता है, वेरिएबल के साथ ग्रेडियंट अटैच्ड होता है ना, विच ग्रेडियंट इनटू वेरिएबल। सो आपके x के साथ क्या अटैच्ड है, ln b, x के साथ ln b अटैच्ड है, तो ln b आपका क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट
ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस कि आपके जो राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल है उसके साथ ग्रेडियंट अटैच्ड होता है, so you get the gradient. Okay, what is remaining? तो ये क्या हो जाएगा? Y intercept. Okay, ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then Madiha, can you tell me the second one? Madiha, tell me the second one. मुझे दूसरा वाला बताओ. सही आपने ln y स्क्वायर लिखा है या नहीं वो एरो लगा हुआ है. बोलो मदिहा, सॉरी. ln y is equals to ln a plus k ln x. ओके, सही है. अब इसमें से y एक्सिस अपनी पॉइंट आउट करो, क्या बनी? ln y ln y. x एक्सिस क्या बनी? k. नहीं, अब x एक्सिस कोई कांस्टेंट तो नहीं हो सकता ना, जी. तो क्या होगा? और m आपका x वेरिएबल कौन सा है? दूसरा वेरिएबल कौन सा है? ln x है ना, तो x एक्सिस ठीक. पे क्या प्लॉट कर देंगे? ln x. तो जो सर ln हमें x के कैसे साथ पता कि k कांस्टेंट है कि नहीं है? जनरली वेरिएबल्स क्या होते हैं? x और तो y सर होते हैं ना. ऊपर देखिए, फर्स्ट वाले एग्जांपल में x था तो वो हमने x लिया, तो यहाँ और पे x फिर ही आया अभी था ना, हम सिर्फ तो यहाँ पे x ही आया था सिर्फ. यहाँ पे ln x आया है. अच्छा सही है. सही है. तो आपकी x एक्सिस भी ट्रांसफॉर्म हो गई है और आपकी y एक्सिस भी ट्रांसफॉर्म हो गई है, to make sure सही that है this becomes a straight line. Okay, makes sense? जी. तो जहाँ पे भी Okay. x होगा, चाहे वो ln x हो या x हो, तो वो लिया जाएगा. x के साथ कुछ भी लगा हो सकता है, कभी x स्क्वायर भी लगा होगा, कभी e पावर x भी लगा होगा. इट डिपेंड्स, एज लॉन्ग एज इट्स अ ओके. वेरिएबल, तो वो जो है वो x एक्सिस पे चला जाएगा और उसके साथ जो भी होगा वो आपका ग्रेडियंट बन जाएगा. जो अलहदा से एक कांस्टेंट टर्म है, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी योर y इंटरसेप्ट. ओके, लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल दैट वी वर डूइंग. तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इन ऑर्डर फॉर दिस कर्व to become a straight line, I must change the y-axis to ln y and keep the x-axis as t. ये कहता है using the given data, draw this straight line on the grid below. अब मेरे पास t की तो values हैं, I should create the values for n, and I'll do ln n. ln 2000 is 7.60. ln 1300 is 7.17. ln 890 is 6.79. ln 590 is 6.38. और ln 395 is 5.98. I'm rounding to two decimal places. That generally that's the wiser thing to do, क्योंकि आप बहुत सारा decimal तो नहीं plot कर सकते, and you will have to make certain approximations as you go on. Okay, so अब मुझे क्या पता है कि मुझे y axis पे ln n plot करना है और x axis पे t plot करना है. तो पहले तो मैं यहाँ पे एक axis बना लेता हूँ. So let me just move this a little up. Okay. Okay. Then ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाना है. Okay. And यहाँ पे although the numbers are such कि मुझे सिर्फ 5, 6, 7 की ज़रूरत है, but I'll have to create it from the start. मुझे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay.
the first point that I need to plot is 1 and 7.60. So अच्छा 8 चल जाना चाहिए यहाँ पे है 1 and 7.60 1 and 7.6 sorry ये गलत जगह लगा दिया मैंने. Okay, that's the first point. 2 and 7.17 2 and 7.17. I'll plot this here. And 3 and 890. 3 and sorry 6.79. 3 and 6.8 is here. And then 4 and 6.38. 4 and 6.4. And 5 and तकरीबन 6 है. 6 and 5.56. 6 and 5.56. Okay. Now, what I have to do is I have to try to draw a straight line through all of these points, right? Remember that whenever you're doing linear law, always try to draw a line of best fit. Okay. If some points don't fit onto the line, try to leave an equal number of points above and below the line. So yeah. So what I'm going to try to do is I'm going to try to draw a straight line through this. और मैं अभी because थोड़ी सी approximations में मसला होगा. So yeah. So that is probably the most accurate line that I can draw out of this. ये एक point blue line के नीचे चला गया. This was the point and this was the point. सही और बाकी points ये रहे. So I've passed through as many points as possible, and I've tried to be as accurate as possible on this. Okay, that's a reasonably correct graph. किसी को यहाँ तक कोई confusion? याद रखेंगे कब? Okay. अब उसने कहा use your graph to estimate the value of A and B. हमें पता है कि हमने जो अपनी relationship transform की थी उसमें A क्या चीज हो गई थी? A was the y-intercept and B was the gradient. सही है? So if I want to find A and B, I will have to use the gradient and the y-intercept. सही है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि y-intercept जो है वो ln A था. Okay. What is my y-intercept from the graph? Use your graph का है ना, तो graph use करना पड़ेगा. So what I'll do is I'll stretch this. क्या आ रहा है? 8, approximately 8. I can see this. ये 8 है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसकी जगह लिख दूँगा 8 equals to ln A. ln को reverse कैसे? By taking it to the other side, and it becomes e power 8. Okay, and what do I get? 2980.95. अब यहाँ पे एक बहुत important बात, मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 significant figures पे लिख देता हूँ. यहाँ पे बहुत एक important बात ये कि
अब जिस तरह आपने कर्व ड्रॉ किया उसके हिसाब से जो है वो आपका आंसर चेंज हो सकता है. तो you have to be precise in drawing. Yes, there is a range of answers that's given in the marking scheme. Marking scheme में availability होती है कि भाई आपका आंसर जो है वो let's say यहाँ पे होगा okay 2900 और 3000 के बीच में आ जाए या 2900 और 3100 के बीच में आ जाए, लेकिन आपको नजर आएगा कि a small change in your graph will cause a very large change in your final answer. तो आपका आंसर जो है वो आपके दोस्त के आंसर से बहुत डिफरेंट हो सकता है. ओके आपका आंसर आपके दोस्त के आंसर से बहुत डिफरेंट हो सकता है. सो you should be aware कि what your graph looks like. आपका as precise as possible. Okay, minor adjustments तो हो सकती हैं, major adjustments तो हो सकते हैं. सही है. ओके फिर B का यूज हुआ था, B gradient में यूज हुआ था. Gradient was minus LNB. Minus LNB. ओके अच्छा अब ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा? आई कैन पिक एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस ग्राफ. जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स आपने ज्वाइन किए उसी को पिक कर लेते हैं. एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ और एक ये वाला, यानी ये पहला वाला और आखिरी वाला. भैया आई टेक दिस वन एंड आई टेक दिस वन. ओके सो माय पॉइंट्स आर 1,7.60 एंड 6,5.56. तो मैंने कहा कि मैं ग्रेडियंट की y2 माइनस y1 लगा लेता हूँ माइनस LNB. You can pick out any 2 points that you want जिससे ग्राफ गुजर रहा हो. आपने रैंडमली नहीं उठाने. यार है माइनस 0.408. सही है. And that gives me सही है. ये आई होप सबको समझ आ रहा है. 1.50 आ रही है B की वैल्यू. ओके find the number of trees surviving after 10 years. ओके सो वैसे तो मैं अगर इसको स्ट्रेच कर पाता तो मैं इसको 10 तक स्ट्रेच करता और मैं वैल्यू निकाल लेता. बट राइट नाउ सिंस आई कांट डू दैट आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन. इक्वेशन मेरी ये थी, इसमें मैं A और B की वैल्यूज लगा देता हूँ. पहले ये बन गया 2980 1.5 माइनस T. ओके सॉरी ये मेरी वैल्यूज बन गई ना. ओके दैट्स माय इक्वेशन. नाउ इट्स आस्किंग यू आफ्टर 10 इयर्स, तो इसकी वैल्यू क्या लगानी है? 10. Can we put this on a calculator and find out? $51.7. Okay. I'm going to say 51.7 trees. It's an approximation. You don't have to round off. Okay, the number of years taken until there are only 10 trees surviving. So n की value क्या हो गई है? n की value हो गई है 10. So 2980 1.50 power minus T. सही है. You use ln on both sides. भाई आपको कैलकुलेशन करना आती है, आपने लोग एडसेंस सीखी हुई है. I'm just going to do it quickly. Divided by ln 1.50. सही है ये. Okay. ये बन रहा है minus T equals to minus 14.05 and I'm going to say T is equals to 14.1. Okay. Any questions? So then let's quickly take a break. I have other things to cover as well. Let's quickly take a 5-minute break. Go get something to drink and eat.
whatever you want, and come back so that we can start off on a fresh note. So yeah, I'm ending the session. I want you to rejoin so that I can break the session into 2 halves for uploading. Okay.